what has just happened at Eden Gardens. We are here to discuss about it. Ratsi, But yeah, can I please interrupt you? Can we yeah, please please. have 2 minutes of silence for Royal Challengers Bangalore tonight? Uh, Please, we can definitely. please Like, let's I have know a two Pratik minutes will of not do silence it, for Royal Challengers Bangalore. but this is for the like peace and like the serenity RCB fans It's should okay, have Pratik. it. It happens with you every year. I think you guys are used to it right now. So it happens, bro. But how this happened? The question is that because abhi pre-show mein I do remember we were Praise the just simply Lord. discussing कि RCB का middle order like उतना strong नहीं है, but then they were coming up with some comebacks कि we have Bracewell, we have Shahbaz and I don't know what not. So they took some names, but afterwards like I can see like जैसे ही top order का clash हुआ, collapse हुआ, afterwards there was no one to take the responsibility. Pratik, how this happened? You know what, Ratsi and Kostav, I'm not really an RCB fan. Just an imposter wearing RCB jersey. I'm actually a KKR fan through and through. Jokes So apart, Korbolor Jipore right away, bro. absolutely Korbol or Bojitpure. Yeah, I don't know if I pronounce that right. I'm not from Bengal, so yeah, We have a close plastic enough, I here. guess. Plastic alert. Well, for Anyway, other people who haven't watched the match, KKR has won it by 81 runs. इसका असर NRR पे भी पड़ेगा. Discussion का point ये भी बनेगा RCB के लिए. But definitely like it's a big thing to now think about. Like RCB core group को अभी सोचना पड़ेगा. ये ऐसा कुछ है जो literally पूरी committees को बैठ के decide करना पड़ता है कि how really we have to like इसमें से क्या चीजें जो टेकअवेज हैं जो समझनी है बिकॉज दिस इज लिटरली अ कोलैप्स और यहाँ पर आरसीबी को मेहनत करने की जरूरत है अपने मिडिल ऑर्डर पे कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है बिकॉज यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन देम इन एवरी मैच फर्स्ट मैच में दे हैव डन इट व्हाट इफ कॉस्टव अगर फर्स्ट मैच जो एमआई के अगेंस्ट था अगर टॉप ऑर्डर को मुंबई इंडियंस के बॉलर्स अगर आउट कर ले जाते तो उसके बाद तो आई गेस फिर ये चीज हो सकती थी ये तो वापस एक रिपीट होता कॉस्टव कॉस्टव काफी खुश है प्रतीक यू कैन आंसर दिस yeah, Sorry, but I couldn't hear you, Ratsi. yeah, okay, he's back. also I'm saying कि जिस तरह से कोलैप्स अभी देखने को मिला है टॉप ऑर्डर आई मीन आरसीबी टीम का उसके बाद मतलब अगर एमआई वाले मैच में सिंस अगर फैफ और विराट इतनी अच्छी पार्टनरशिप नहीं दिखाते और किसी तरह एमआई उनका विकेट ले पाती तो शायद ये रिपीट टेलीकास्ट होता उसी मैच का फिर मे बी बीइंग एन एमआई फैन आई एम आस्किंग दिस Kaustubh, you're getting my Again, audio sorry, now? I couldn't hear a single thing you said. Pratik, you've heard I also couldn't hear, like, but I think I got the gist of. yeah, tell me. Yeah, Pratik, go ahead. I'll just go after you. I think RCB I think over the last, I don't know, a decade and a half, RCB have been predominantly a side that relied very heavily on the top three, number one, two, and three. Initially, it was about Gale, Kohli, and AB de Villiers. Of course, when I say not one, two, three, not the batting order, because the openers predominantly were Dilshan and Gale, but it was mostly about these three players. And right now, over the last couple of years, I fear it has been once again about three batters: Kohli, Faf, and Maxwell. And this time, like you yourself said, in the middle order, there were others like Bracewell, who was a very good signing. He Yeah. has been in this situation time and again, like, having to overcome an impossible task while chasing for New Zealand and now for RCB as well. Once again, I think RCB's main concern here is that once the top three got out, like it has been historically for the last decade and a half, they don't Right. have anybody to look up to. And today, the collapse was mainly because it was a track where it was offering a lot. I mean, a lot of turn for the spinners, and unfortunately, only one team capitalized on it. And on a wicket that offered so much turn, I think the target, anything above 170, 180, could have been impossible to chase against a side like KKR that has three spinners Hmm. and quality spinners. One of them, Yeah. of course, we are seeing him today, and the other two, these two have done the job. Of course, one veteran spinner, Sunil Narayan, who has been doing job for years and years together now. And today, the collapse was all about RCB having to overcome a target that was impossible to chase on the surface.
Yeah. Right. I was again coming on that point only, which we were discussing in the pre-match show as well. Sunil Narine is a great threat to Virat Kohli, and he has proved it today as well. Like वो उनके लिए मतलब I will not say कि it was very easy for him. Maybe वो उनकी सालों की मेहनत है, उनका एक्सपीरियंस है जो आज इतने लेजेंडरी प्लेयर, इतने ग्रेट प्लेयर के अगेंस्ट उनके लिए हमेशा मटेरियलाइज होता आया है. बट इट हैज बीन लाइक समथिंग विराट कोहली हैज टू डू बिकॉज वो डिकोड हो चुके हैं सुनील नारायण के थ्रू, डिकोड हो चुके हैं. नाउ ही हैज टू डू समथिंग ताकि उनका विकेट उनके हाथों ना जाए. अभी उनका चैलेंज कोलकाता के अगेंस्ट नहीं, इटसेल्फ सुनील नारायण के अगेंस्ट है कि उनको कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा जिससे वो इतना इजी टारगेट ना साबित हो सुनील के लिए. So today, interestingly, I was uh, talking about Sunil Narayan as he was picking wickets, starting from Virat Kohli. So there have been many mystery spinners over the years. We saw Ajanta Mendes, we saw Varun Chakravarti as well. I mean, he picked up wickets today, but uh, I mean, with all due respect to him, it doesn't seem as if he will last as long as Sunil Narayan has been lasting as a mystery spinner. Um, there have been others, Sikandar Raza now. But one spinner, none like others, one mystery spinner, who has stayed mysterious for all these years. That is Sunil Narayan. Nobody has had the longevity like him. And we are talking about a player like Virat Kohli. I mean, one Yeah. of the best batters in the world the country has ever seen. He has been struggling constantly and he has not been able to decode the mystery. And Right. hats off to Sunil Narayan especially because he had to remodel his action after it was asked to be remodeled because of suspect action Yeah. like that. So I think commendable. Yeah. राइट राइट विद दैट वी हैव अ मैच समरी एज वेल टू शो यू कि आफ्टर ऑल यहाँ हुआ क्या, ईडन गार्डन्स में हमें क्या देखने को मिला. तो जैसा कि हमने आपको बताया था, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का फैसला लिया था. कोलकाता नाइट राइडर्स बैट करने के लिए उतरी थी. इनिशियली वो भी ज्यादा रन जुटा नहीं पाए थे. जैसे ही उनकी ओपनिंग जोड़ी जैसे ही गुरबाज के बाद एक के बाद एक हमें कोलैप्स देखने को इवन केकेआर के एंड से भी मिला था, बट समहाउ शार्दुल ठाकुर डिड इट और उसके बाद से फिर हमें 204 का स्कोर देखने को मिला. 7 विकेट्स गवाए कोलकाता ने, लेकिन उनको एक अच्छा स्कोर मिला जिसको चेस करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उन्होंने टारगेट दिया. आफ्टरवर्ड्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उतरी, टॉप 3 थोड़ा बहुत स्कोरिंग करी, बट उसके बाद ज्यादा प्लेयर्स टिक नहीं पाए और एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते चले गए और आखिर में ऑल आउट हो गई आरसीबी और कोलकाता ने 81 रन से ये मुकाबला जीता. वही इस बीच अगर बॉलर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट्स लिए, विच इज अ वेरी गुड नंबर, विच मेक्स हिम लाइक हम मेरे एंड से तो प्लेयर ऑफ द मैच का एक बड़ा कंटेंडर. लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरा सुयश, इनके बारे में जरूर बात करेंगे. ही इज एन एक्साइटिंग टैलेंट एज वेल. कौस्तव सुयश शर्मा के बारे में बात करेंगे. लाइक मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, बट आज उन्होंने लिटरली इंप्रेस किया द वे ही हैज बोल्ड. ही वाज वेरी हैप्पी और उनका सेलिब्रेशन स्टाइल भी मैंने देखा जब उन्होंने विकेट लिया अभी, वो भी काफी एक्साइटिंग था. हाउ डू यू सी दिस पर्सन? या आई मीन द बॉलर, द काइंड ऑफ बॉलर सुयश itself is, he is really impressive today. Yeah, he was impressive, and in the pitch of at Eden Gardens, I think he will get better. And the pitches where spinners will get a lot of help, I think Suyash can make a lot of impact in places like Hyderabad, Chennai, or probably Rajasthan. Coming to his form, before the start of the IPL, a lot of journalists, senior journalists, covered that he's a very exciting talent, doing very well in the nets. And just in the pre-show, also I stated that I'm very excited to see how Suyash Sharma perform in this match. And of course, he destroyed, so to say, RCB's batting lineup along with Narayan and Varun Chakravarti and picked up an easy win for KKR. I think he's one of the talent who has the capability of being a match winner in KKR this season. Because again, KKR has always been a franchisee who depends a lot on their spin bowling over the years. In our title-winning campaigns, we have seen Sunil Narayan and who were there at that point of time played a huge role. Spinners always has been important for KKR, and this Suyash Sharma is going to be no different. Great. So let's take a look at the first innings and second innings top performers as well. Afterwards, we'll continue the discussion. So सबसे पहले देखेंगे कि हमारे फर्स्ट इनिंग के जाबाज कौन थे. तो शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली
ही स्कोर 68 रन्स और इनकी वजह से कोलकाता ने इतना बड़ा स्कोर बनाया, वरना आरसीबी के लिए शायद ये एक वॉक होता। बट डेविड विली इटसेल्फ आरसीबी के एंड से उन्होंने 2 विकेट लिए, 16 रन्स दिए 4 ओवर्स में, और ये काफी डिफिकल्ट होता है कि आप 4 ओवर भी फेंको और इतने कम रन्स दे। वही सेकंड इनिंग्स में टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, आरसीबी के एंड से फैफ डु प्लेसी 23 रन्स उन्होंने बनाए, बट केकेआर के एंड से इट इज वरुण चक्रवर्ती हु टुक 4 विकेट्स 15 रन्स। मुझे याद है कल के मैच में नेथन एलिस ने भी कुछ ऐसे कुछ किया था, 4 विकेट्स लिए 16 रन्स दिए थे, एंड आई थिंक अब ये बेंचमार्क सेट हो गया है कि इफ यू वांट टू बी द प्लेयर ऑफ द मैच जस्ट सिंपली टेक 4 विकेट्स, दैट्स इट, दैट्स डन। और वरुण चक्रवर्ती ने आज वो करके दिखाया है। मुझे जानना है आप में से किसी ने उनको आज का प्लेयर ऑफ द मैच चुना था क्या? मैंने चुना था प्लेयर ऑफ द मैच। फॉलो करेंगे व्हाट्सएप को। मैंने बस वरुण चक्रवर्ती को पता नहीं क्यों शो खत्म होते होते बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा किसको पिक करा जाए, और वरुण चक्रवर्ती ने लास्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। भले ही 1 विकेट शायद लिया था, लेकिन बॉलिंग बहुत इंप्रेसिव किया था। मैंने सोचा ईडन गार्डन्स में मैच है और सेकंड बॉलिंग होगा तो वरुण चक्रवर्ती शायद कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि सुनील नारायण इकोनॉमिकल रहते हैं लेकिन ज्यादा विकेट लेते नहीं है। और दूसरी तरफ सूर्य शर्मा, आई हैड zero clue how सूर्य शर्मा was playing. I knew he had the talent, but I didn't know how he will perform. So I went with Varun Chakravarti, and wow, what a performance from him. प्रतीक, So आपने if you किसको had to, चुना? I picked Mohammad Siraj actually. First of all, I Jokes take on this you, as an bro. RCB victory. I take this as an RCB victory because not only did they score more than 49, they scored twice more than that. So yeah, Wow, that's a what victory in standard, itself. bro. This is your standard now, legit. Come on. Yeah, so they were once they were past the lowest score mark, I was like, okay, yeah, they're safe now. The embarrassment is done. No, I mean, I picked Mohammad Siraj simply because historically Eden Gardens offer a lot more to fast bowlers than Chinnaswamy does. And today it was all about spinners. And I picked Siraj because, first of all, I thought RCB were the favorites because KKR Why? look a little Why? because of Why? many reasons. Like on a serious note, I think KKR look a little undercooked because first of all, yeah, today they had a great day. One, I mean, it was if it was not for Shardul Thakur, their innings would have been in shambles. Okay, yeah. As an RCB fan, I see Russell get out. I'm like, okay, yeah, thank God. Okay, all the batters are out, and then I see, then I virtually see Russell in disguise because what Thakur played, Lord Thakur played was a Russell kind of an innings. It was Andy Russell in disguise. That was Right. just You guys should be he worried just about our bowling all-rounders, bro. You should be not yeah, bowling absolutely. all-rounders, but all-rounders who will come to bat after 6. Russell, Yeah. Narain, Shardul Thakur, RCB. These are like enough So for you. if I were to pick my man of the match, my player of the match for today, I think it is Shardul Thakur for without any doubt, without a shadow of doubt, because if it was not for him, they wouldn't have had the momentum. The momentum was completely Right. with RCB. It was Right. a counter-attacking innings, and it completely changed the course of the match. वो जो प्रेशर था आरसीबी के ऊपर, वो केकेआर के एंड से शार्दुल ठाकुर ने रखा, और जब वो स्कोर 200 प्लस हुआ तब आरसीबी को सोचना पड़ा हाउ टू डू दिस, वरना इसके पहले उनके लिए, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, एक केक वॉक हो सकता था, बट ड्यू टू शार्दुल ठाकुर ये इतना डिफिकल्ट बना। कौस्तव, आप अग्री नहीं करेंगे फॉर मेनी रीजंस। मैं इसी कारण एग्री नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज देखिए, अगर केकेआर ने 150 भी बनाया होता इस मैच में, जो पॉसिबल था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि केकेआर को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। ऐसा नहीं कि आपको 20 for 5 और 30 for 5 से 40 for 5 ऐसा कुछ नहीं था। 100 रन क्रॉस कर चुका था, और तब शायद लग रहा था कि नहीं, केकेआर को शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन जब वो रन क्रॉस कर चुका था, अगर 150 भी पकड़े तो केकेआर के पास ऐसा स्पिन बॉलिंग था कि वो उस टारगेट को डिफेंड कर सके। मैच शायद बहुत क्लोज होता, लेकिन मैं कभी ये नहीं कह सकूंगा कि केकेआर मैच में नहीं होता 150 का स्कोर होता तो भी, क्योंकि अगेन जैसे नारिन, वरुण चक्रवर्ती और सूर्य शर्मा ने आज बॉलिंग किया, आई थिंक लाजवाब था, और कुछ भी टारगेट आई थिंक आरसीबी के सामने मुश्किल हो सकता था। वैसे हमें इस Once again, if I may add one thing on that, they were staring at 150, 160 anyway, and given these set of bowlers, these spinners who did very well today, asking them to defend that kind of a score, 150, 160, 170, psychologically would have been a lot more. It was asking a lot. It would have been asking a lot more of them. Yeah. Psychologically, yes, but I think they have the quality to defend that kind of a total. That Yeah, is what definitely. Yeah. बट वो उस प्रेशर का क्या करते कौस्तव, जो उन पर ऑलरेडी होता है एक लो स्कोरिंग मैच का, कि उनको इतना कम रन चेस करना है, बिकॉज वो अच्छे से I'll अच्छे give you बॉलिंग अटैक को हिला देता है व्हेन यू डोंट हैव इनफ रन्स ऑन योर स्कोर कार्ड।
I'll give you an example, Ratsi. So I think it was 2016, 17 probably. हमारे पास टारगेट था 135. हमने आरसीबी को 49 पे ऑल आउट कर दिया था. 135 इज नॉट दैट बिग टोटल. ईडन गार्डन्स में मैच था, हम लोगों ने 49 पे ऑल आउट कर दिया था. तो ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट कितना होना चाहिए. और हमेशा हमने देखा है कि एसआरएच बहुत कम टारगेट करता था. उसने जब 2016 में जब चैंपियन भी हुआ था, राइट, तभी राइट, 140 रन आराम से राजस्थान को लेकर वो डिफेंड कर देता था. तो राइट, राइट। हमारे पास ऑफ कोर्स अगर टैलेंट है तुम्हारे पास तो कुछ भी हो सकता है मैच में. पॉइंट है, बट हमें इस डिस्कशन के बीच में रहमानुल्लाह गुरबाज को नहीं भूलना चाहिए. द वे ही हैज आल्सो प्लेड, अ यंगस्टर फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड ही हैज प्लेड रियली गुड इनिंग्स. कौस्तव, रहमानुल्लाह गुरबाज की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? 57 रन्स ही हैज स्कोर्ड, ही हैज गिवन अ गुड स्टार्ट. Yeah, of course. You expect that from रामलला गुरबाज. दुनिया के हर जगह जहां पे भी वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा रन बनाते हैं. कैन यू हियर मी? Yeah, you are Yeah. perfectly audible. ओके. सो जहां पे भी खेलते हैं तो वो बहुत रन बनाते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक मेरा प्रॉब्लम केकेआर मैनेजमेंट के साथ है, क्योंकि अगर आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है और लिटन दास बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, तो फिर आप जो रॉय को क्यों लिया, जेसन रॉय को टीम में क्यों लिया? आई थिंक यू कुड हैव गॉन आफ्टर अ मिडिल ऑर्डर बैटर हु कैन bowl a bit. I think Travis Head or someone like Daryl Mitchell would have been perfect. So I'm not quite sure what the KKR management is thinking, especially when Gurbaz is in this kind of form. Right, right. Pratik, do you want to add something on Rahmanullah Gurbaz? Sorry. Yeah, we have seen. I first saw him in Asia Cup. Yeah, him opening with Hazratullah Zazai, and what I saw was he's that kind of a player who will be positive from the word go. He just looks to his natural game is to just attack, attack, and attack, and not just meaningless attack. A very smart player, and yeah, I've always ever since thought that he could be the next big thing Afghanistan would produce. They've always lacked batting superstars, and he could definitely be one of that. Right, and I think Kostav has gone somewhere to maybe to celebrate about the match. But That's Pratik, exactly. Rinku Singh, yeah, he has scored 46 runs, और ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने कोलकाता की वो जो जाती हुई पारी थी उनके हाथ से, उसको संभाला था एक एंड से खड़े होकर के वो अपनी बल्लेबाजी दिखा रहे थे. 46 runs he has scored, he has also done good. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिंकू सिंह वहां पर टिक करके उस ऑर्डर को संभालेंगे, बट आई थिंक इतनी बात होती भी नहीं रिंकू सिंह एज बैटर की जब बारी आती है कोलकाता की. Well, about Rinku Singh, Rinku, we have seen him show glimpses in the past. He has had a few good innings with the bat. And the thing about Rinku Singh today was that once he realized that Shardul Thakur was doing the aggressive role, playing the aggressive role, he knew that all he had to do was just rotate the strike, give it to him, because obviously the batter on the other end was connecting the ball, was able to score runs more freely. So his job was simple. He had that clarity of thought. He was in a better headspace to realize that okay, he had to just not. Although he was a specialist batter among them, he just had to rotate the strike and give it to Shardul Thakur. It was just that simple. I think he did the anchor's role. He played the anchor's role really well because initially he was playing at 100 strike rate, and eventually in the end when he needed to up the ante, he did. So today I think Rinku Singh's innings can be easily forgotten, let's say a week from now, but today it was extremely important for them to score 200 plus because he held the innings together from one end, Right. while Shardul Thakur at any moment could have, let's say, edged one and gotten out. But yeah, he was there, made sure that there was somebody at one end. राइट, और जब जैसे अभी कौस्तव थोड़ी देर के लिए आए थे, मुझे उस टाइम पे मनदीप सिंह याद आए. दो अगेन जैसे हम लोग प्री शो में बात भी कर रहे थे कि आउट हो गया है तो हो सकता है कौस्तव दिस इज यू, तो उसने बोला नो, मनदीप सिंह की बात आते ही लाइक ही विल गो आउट, एंड वी सॉ ही लाइक डक पे आउट हो गए मनदीप सिंह. Yeah, कौस्तव अगर इस बैंटर को कंटिन्यू करते, बट मनदीप सिंह को लेकर के जो खास प्यार है कौस्तव का, वो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो भी सुने कि आफ्टर ऑल कितने हाईली रेट किए जाते हैं मनदीप सिंह व्हेन इट कम्स टू कौस्तव. बट ऑल इन ऑल प्रतीक, लाइक सारा मजाक सब कुछ चीजें एक किनारे, बट being an RCB fan right now, you might be feeling very low, but we all know the kind of team RCB it is, and we definitely know they can make a comeback. They can at least entertain their fans, and with good cricket जो उनसे expected होता है, result चाहे जो भी हो, it's a cricket match. That's like at the end of it, it's a cricket I'll tell match. you one thing, Ratsi, about this. I'm an RCB fan, and I've been one since the inaugural IPL. Season.
And when I say this, I speak for every RCB fan. Whether we, if we win, we are extremely confident, Hmm. and especially when we lose, we are even more cocky and confident, saying that no, look at us in the next game. We have lost so many times over the years. We have grown thick skin, and we have learned to live with it. So yeah, that's just us RCB fans. So yeah. Definitely. Even I've heard this. I don't know. Someone was telling this on like some legend or maybe some former player is saying this. But if आरसीबी अगर एक बार ट्रॉफी जीत जाए तो शायद वो जो जितना मैं क्या बोलूं इस चीज को वो जितना हार्डकोर फैनशिप है ना वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी बिकॉज नाउ दे हैव वन इट वो नहीं मिल रहा है सो दे ऑल आर दे ऑल आर लाइक एवरी Yeah. डे ई साला कप ना दे एवरी ईयर इट इज नॉट गोइंग अप वो मतलब एवरी ईयर उनका टैगलाइन है सो इट हैज बीन लाइक दिस बट अगर अभी एक बार अगर आरसीबी ट्रॉफी जीत जाए आई नो बैंगलोर में तो वो रात दिवाली की होगी जिस रात आरसीबी ट्रॉफी जीती लेकिन उसके बाद फैनशिप थोड़ा सा नीचे आ जाएगी बिकॉज वो जो एक वो होती है ना कि एक अर्ज होती है हर किसी के Yeah. अंदर वो अर्ज कम हो जाएगी बिकॉज नाउ यू हैव वन इट इज इट ट्रू Absolutely true. Oh my goodness, that makes so much sense because me as a 15-year-old kid, I was watching the 2011 World Cup. As a 10-year-old, 11-year-old kid, when I saw India play in the 2007 World Cup, it was a humiliating defeat for them against Bangladesh, and they were out in the group stages. And World Cup campaign was over before it was even over. I mean, just at the start, right at the start of it. So I was very emotional seeing India qualify for the finals. Like the final was much awaited. They win it. Okay, yeah, I scream a lot. I celebrate a lot. I was like, okay, what now? India have won the World Cup. So what? Okay, yeah, that's done. So yeah, I mean, probably that's how it's going to be for RCB after waiting for so long. You want something so badly, and once you get it, you just want it once more. You just look for something bigger. I think that's how राइट life राइट राइट is. Yeah. और एंड यू नो व्हाट प्रतीक द मोमेंट कॉस्टव हैज कम बैक प्राइवेट चैट पे उन्होंने क्या डाला है मनदीप सिंह मोस्ट डक्स इन आईपीएल एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद दिस विद प्रतीक कि अगर कौस्तव यहाँ पे होता तो हम बात करते कि हम प्री शो में बात कर ही रहे थे कि मनदीप सिंह के जैसी उनकी बारी आई थी हमारा विकेट गिर गया था उस टाइम पे कौस्तव ने यही बोला था कि मनदीप की बात आती है देखो आउट हो गया वो अभी आउट हो जाएगा और सेम हैपेंड इन दिस मैच कौस्तव यू वर सो मिस इन दैट कॉन्वर्सेशन मैं तो बोलता हूँ यार 10 प्लेयर के साथ खेलो, कोई बात नहीं। बेकार एक प्लेयर इम्पैक्ट को पे क्यों मत खिला लो रहे हो? इम्पैक्ट जरूरत ही पे नहीं है। से खेल लो वेंकटेश अय्यर मत खिलाओ यार, क्या बोले अब केकेआर मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं पता नहीं। मनदीप इतना क्या मतलब सबको इम्प्रेस किया है प्रैक्टिस ग्राउंड में। आई हैव जीरो आइडिया, बट व्हाई डू वी हैव हिम इन द स्क्वाड? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ फील्डिंग? Because with the bat, he has never shown that he has, like in the last 5-6 years, he has never shown in T20 He cricket he should has start a ball what it takes. probably. I I don't know. Again, probably they are playing truth and dare game. Okay, chalo, let's say what is going on. I have zero idea. मुझे लगता है कौस्तव ना बस ये इतनी सी बात थी जो मनदीप सिंह को चुन लिया वरना कौस्तव वाले भी बोले थे चंद्रकांत पंडित को बस ये इतनी सी बात रह गई जिससे वो बोल नहीं पाया ये बात I think बट the लेट्स reason मूव why टू won today, I think the credit goes to Chandrakant Pandit. He brought Shardul Thakur. ओके राइट राइट हम पॉजिटिव्स की तरफ फोकस करेंगे लाइक ऑल क्रिकेट फैंस शुड डू बट विघ्नेश भारद्वाज का क्वेश्चन आया एनी थॉट्स ऑन व्हाई आरसीबी वेंट विद अनुज रावत इंस्टेड ऑफ महिपाल लोमरोर एज देयर इंपैक्ट प्लेयर bit of shockers that Pratik this is for you Absolutely, I was absolutely shocked. Anuj Rawat is a good batter, no doubt, but Mahipal Lomror, he's a bit of an experienced campaigner right now for RCB. He has played before, he has started before in the playing 11 time and again. He has experience playing out there in the middle and facing this sort of situation, pressure situation. Whether I think sending in Anuj Rawat was a bad decision, I don't know. But do I think Mahipal Lomro should have come ahead of Anuj Rawat? Most definitely, because as I've mentioned before, Lomro, he's someone who has batted in the middle order before. Anuj Rawat, I believe, is a top order batter naturally. So there are so many factors here as to why Lomro should have come ahead of Rawat. And I think today it was not a good implication of impact player. I mean, it's the first time RCB have used in this campaign so far, and they've gotten it wrong. Simple as that.
Okay, so thank you for your answer, Pradeep. But we have got player of the match now. It is none other than शार्दुल ठाकुर, जो कि चाह भी रहे थे हम सभी लोग कि 68 रन उन्होंने बनाए, और डेफिनेटली जिस एंड पर कोलकाता थी वहां से खींच करके अगर 204 का स्कोर गया है, देन द होल क्रेडिट गोज टू Shardul Thakur with Rinku Singh with him. But like a good player to go for the player of the match award. Any like आप लोग को दोनों में से इस बात से अग्री करते हैं शार्दुल ठाकुर इज द प्लेयर ऑफ द मैच, या फिर कोई और प्लेयर है जो इक्वली ये स्टैचर रखता है? So, first of all, I think if not for, let's say, Shardul Thakur had a very typical cameo that is expected of a lower order batsman, a bowling all rounder, let's say, he would have scored some 10 or 5 runs. Once again, I don't think Kolkata KKR would have had a chance to score over 170. I, at a point, thought 170 or 170 to 180 would be a very good total given where they are. I think They're KKR top. didn't even target that much, 200. It's impossible for them to target. Yeah, yeah, yeah. I think, I 200 think seemed I, as a KKR extremely. fan, I was Yeah. thinking of at that point of time when Russell got out, I was thinking maybe 160, 165. I was absolutely happy with that. Yeah, I think 200 is something that every KKR fan wouldn't have foreseen in their wildest dreams. And I think the match was over right there because it was just extremely poor from RCB bowlers on a wicket that offered so much for the bowlers. They could not close it down once they had the momentum. The momentum just slipped. And I think today, while I think KKR bowlers did a great job, they lost to one man, and it was Lord Thakur. Simple as that. I think I'll have a question for Pratik. Pratik, do you think Yeah. Fab du Plessis' captaincy was a bit average today? Because in a I think pitch it. where spinners were getting a lot more help, he didn't Yeah, use his spinners properly, probably. yeah, that's right. What kind of Um, captaincy? yeah, I think captaincy was average. It wasn't uh, as good as it is expected of someone that as experienced as Faf du Plessis is. While on the other hand, like I tweeted before, I think we are living in Nitish Rana's era. We are seeing an up and coming captain. You never know. Hmm. Jokes aside, I think the way Nitish Rana and KKR team, the way they really made use of the track with their spinners that they had on offer, I think it was absolutely brilliant. On the other hand, it's not as if to say that the captaincy was bad. It was just average because No, no, I'll um, give you an example why I feel Fab's captaincy was terrible tonight. Shabazz bowled only one over, gave only 6 runs. Didn't bowl yeah, again. Didn't give the ball to Maxi. I mean, in a spin-friendly track where the spinners are getting help, pacers are going for yeah. runs. I have zero idea why this decision was taken. Yeah, I was a bit shocked as well. But then again, I thought probably Faf was being a little reactive than being proactive because once he saw Michael Bracewell get hit for sixes, must have thought, okay, yeah, can't give it to spinners. Need to get this guy out. Need to get Shardul Thakur out with the help of pacers. But no, he dealt with them brilliantly as well. In the end, it was just too much damage, and Thakur was well and truly settled. And I don't know. It was a bit like Murphy's Law. Things were just going bad, and it was going from bad to worse. And it was just absolutely horrible in the end for RCB. The momentum was completely gone, and the match was well and truly under KKR's grasp. And for RCB, on the other hand, the match was over, I believe. Yeah. राइट, और यू नो व्हाट प्रतीक, आरसीबी को अगर मैं कभी भी सपोर्ट करती हूँ तो दैट वाज द ओनली रीजन बिकॉज फैफ डुप्लेसी दिस टीम हैज, एंड आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर. But you have As a criticized player, him yeah. as well. Why RCB fans cannot see my happiness? Like, if I like them because of Fab du Plessis, they'll criticize it. If I like MI, they'll criticize it. This will happen. Like, ये बहुत time से चलता आ रहा है. But let's move on from this discussion. Let's go on to see social tracker because we have got some interesting tweets to share with you. और इस मैच के बाद तो definitely हम expect कर रहे थे ऐसे tweets. Out of syllabus, RCB bowlers prepared for all batsmen. Lord Shardul Thakur. We all know what he has done in this match. और ये मीम कुछ उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ. What a player it is. Suyash Sharma, this guy, इसका नाम याद रखना है. Remember the name as we all used to see. क्योंकि सुयश शर्मा ने जैसा आज परफॉर्म किया है, आगे आने वाले मैचेस में इनको अब ज्यादा मौके देखने को मिलेंगे और सुयश शर्मा से हमें डेफिनेटली उम्मीद होगी. नेक्स्ट इज SRK watching Lord Shardul Thakur. The real emotion, we know this emotion, we know this kind of a expression on SRK's face. इसके पहले भी हमने देखा था और अभी भी
वी कैन सी दिस इज हैपनिंग, और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने खेला है उसके बाद डेफिनेटली केकेआर इस बात से खुश होगी। बट एक बार पॉइंट्स टेबल पे देख लेते हैं कि इस मैच के रिजल्ट के बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हुई अभी, जैसे कि कहा गया था कि इस मुकाबले के बाद आरसीबी को फर्क पड़ेगा, उनका एनआरआर पे भी फर्क पड़ा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अभी इस वक्त टॉप पर चल रही है गुजरात टाइटंस, 2 मैचेस में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स उनके हाथ में। पंजाब किंग्स 2 मैचेस में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स। राजस्थान रॉयल्स के पास 1 जीत के साथ 2 पॉइंट्स। वहीं केकेआर नंबर 4 पे है, जिन्होंने अभी ये मुकाबला जीता है। फिर एलएसजी आती है नेक्स्ट, उन्होंने 1 मुकाबला जीता। देन सीएसके जो 1 मैच जीत चुकी है। देन आरसीबी जो पिछला मैच जीत करके आए थे और इस मैच को वो हार गए। वहीं डीसी है जिन्होंने दोनों मुकाबले खेले हैं और अभी तक एक भी मुकाबला जीता नहीं है। एमआई एसआरएच सबसे नीचे, जिसमें सबसे खराब एनआरआर इस वक्त एसआरएच का है, इसलिए वो सबसे लोएस्ट पे है। वेल सेकंड लोएस्ट एमआई का भी है, बिकॉज उनका भी एनआरआर कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, बट लेट्स नॉट गो देयर एटलीस्ट टुडे। इसके बारे में हम लोग जरूर बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच कौस्तुभ एंड प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस डिस्कशन, एंड डेफिनेटली वी आर गोना कम बैक फॉर टुमारोज मैच। प्री शो में जुड़िए और हमारे शोज में अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। कोई क्वेश्चन या किसी भी तरह के डिस्कशन में अगर आपको आना है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम उसे यहाँ जरूर लेंगे और आपको अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। तब तक थैंक यू सो मच और देखते रहिए क्रिक ट्रैकर इन दी एयर।